silence now, and most of you all are aware, as we have given the notice earlier today, you people all are here for the workshop on the topic scope and future of e-commerce in Indian market. I welcome the team from the Indian Institute of E-Commerce, Mr. P. Rajguru and Professor B. K. Gupta ji. I welcome all the dignitaries, our Vice Chairman Anjul Agrawal ji, Director General Professor V. K. Jain, Group Director Professor Ranjit Singh ji, Director HRIST Dr. Nirdosh Agrawal ji, HOD MBA Dr. S. K. Singh, all faculty members. First I request all the dignitaries to light the lamp to start the function, and after that we will start rest of the process. I request the dignitaries to light the lamp, please. सर हेलो हेलो सर पीछे उधर से ठीक है सर Any other than these course? Okay. So all BCA, BBA, BCom and MBA students are here. Okay, good. So already I have announced the topic to you people, and now onwards, please settle down. Vice Chairman Sri Anjul Agrawal ji to say a few words to you, his blessings to you people. With that, we will start the program. I request Anjul Agrawal ji. Dr. Gupta, Dr. P. Kumar ji, Director General V. K. Jain sahab, Group Director Ranjit Singh ji, Head of the Department Professor Rawal, Director HRIST Nirdosh ji, all the faculty members and dear students. I want to ask one question. What is your feeling right now that one company has came for you for your placement? Anybody has any vision? Anybody has any vision that they want to achieve a target? They have certain thought among themselves that they need at least this much of salary, at least this much of placement, at least this much of goal, that my starting salary should be of this amount, or any one of you? Recently, sir has came twice in our campus and he has asked me this question कि sir, जो भी बच्चे हम यहाँ से कैंपस में प्लेसमेंट में सिलेक्ट करेंगे, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का विजन जानना कि बच्चे अपनी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो क्या सोच के जॉब शुरू करना चाहते हैं. अगर बच्चों का विजन नहीं होगा तो फिर हम कैसे एक एक स्टूडेंट को जो है एनालाइज कर पाएंगे. आज today is a golden opportunity that both of the great professors and directors of the company are in front of you and they are ready to push you off.
They are ready to take off your careers to heights. My management team, my professors team is ready to work on you. But the first thing I want is feedback from you. अगर कोई कंपनी आ रही है कैंपस के अंदर तो केवल वो अपनी मार्केटिंग करने थोड़ी आ रही है, वो आप लोग को एनालाइज करने आ रही है। पहले तो मुझे ये बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब करनी है और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु वांट टू डू द जॉब इन द मार्केट? गुड। मैंने आप लोगों से पूछा आप लोग का विजन क्या है। अभी तो चलो स्टार्टिंग है, आने वाले 4 साल 5 साल में किस तरह की जॉब या किस तरह की सर्विस अपॉर्चुनिटी आप लोग देखना चाह रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी एमबीए किया हुआ है और मैं भी कैंपस प्लेसमेंट में बैठा था अपने टाइम पे। ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टीट्यूट है या हमारा इंस्टीट्यूट है तो मैंने कभी कैंपस प्लेस, अगर ऐसे ही ब्लैंक रहेंगे क्या मैं सर को जवाब दूंगा? आई वॉन्ट टू थिंक बेटर। आप लोग कुछ बेहतर सोचिए अपने लिए। आप लोग के सामने विजनरी पर्सनैलिटी, आप लोग के चेयरमैन सर, he started this institute with just one course and today he is member parliament and ready to do anything for you. So you have a great experience, but with that experience you need to do a lot more. I want that don't waste your time in stupid things. Just focus on your career. Enjoyment के लिए बहुत समय मिलेगा, बट enjoyment का जो मतलब है वो तब आपको समझ में आएगा जब आप मेहनत करके उस enjoyment को देखेंगे। मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो बहुत ही ऐसा टाइम होता है जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका ज़्यादा ध्यान जाता है, बट वो सब भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की कॉलेज के प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, और अगर आप लोग अपना विजन मिशन नहीं बताएंगे, अपना गोल नहीं बताएंगे, अभी तो फिलहाल सर दोबारा 3 बार 4 बार आने के लिए तैयार है स्क्रूटनाइज करने के लिए कि सर जो भी स्टूडेंट हम लेंगे वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। अगर भीड़ में ही खड़ा होना है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं है किसी चीज़ का। बट यू हैव टू बी ए स्टैंड अलोन, यू हैव टू बी ए स्टैंड अपार्ट इन द क्राउड। आप लोग के पेरेंट्स की भी यही उम्मीद होती होगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट करें, अच्छे से अच्छा बिजनेस करें, बट उन सब चीज़ों के लिए, उन सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। Thank you, Vice Chairman sir, for your motivating words. Now, I request our Director General sir to share some words with you to motivate you. Our Director General sir, Professor V.K. Jain sir. Director, Quran Technology Limited. Mr. P. Rajput, Director, Indian Institute of E-Commerce. Dr. Ranjit Singh, Group Director. Dr. Nirdosh Agarwal, Professor H.S. Rao, faculty, colleagues, and dear students. Today we have assembled for a seminar of the scope and future of e-commerce in India. You are all aware of e-commerce. What is e-commerce? It is expanding day by day. We are living in digital India. We are moving very fast. Even USA is not moving that fast as far as digitalization is concerned. India is moving very fast. It has very good brain, very good resources, dense population, and digital India is increasing in a way. Banks are vanishing, post offices are vanishing, everything is being digital. Today, market space is digital.
whenever you don't find something, you ask your friends. एक ही जवाब मिलता है, कोई सामान जो नहीं मिल रहा कहीं पर, इवन दुकानदार कहते हैं या आपके फ्रेंड्स कहते हैं अमेज़न पर ले लीजिए, फ्लिपकार्ट पर ले लीजिए। कभी ध्यान दिया है आपने कितने स्टोर्स इनके पास जुड़े हुए हैं, कितने लाखों प्रोडक्ट्स इनके पास हैं विद नो फिजिकल स्टोर का स्टोर। वॉलमार्ट का नाम सुना आप लोगों ने? वॉलमार्ट फिजिकल स्टोर है, साथ में ई कॉमर्स का भी काम करता है, हर चीज अपने बहुत बड़े स्टोर होते हैं वॉलमार्ट के। उसके बाद भी दे आर नॉट एबल टू डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो उनकी जो चेन है दूसरी जगह से मंगा देते हैं, आप ऑर्डर कर दीजिए, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। चेंज अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। लॉ ऑफ नेचर है, जिसने भी डिजिटाइजेशन को नहीं फॉलो किया, नहीं इसको अडॉप्ट किया, वो सर्वाइव नहीं। बैंकों में आप देख लीजिए कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन है, जिन लोगों ने नहीं किया दे हैव टू टेक रिटायरमेंट। हर जगह, हर दफ्तर में, हर जगह आज डिजिटाइजेशन हो रहा है। हो सकता है आने वाले समय में टाइपिंग का काम खत्म हो जाए। आप ईमेल भेजते हैं, मेरा ये मानना है कि कल को इट इज वेरी मच पॉसिबल वॉइस पैकेट से चले जाएंगे, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व इन सच ए वे, पासवर्ड का काम ही खत्म हो जाएगा, योर फेस विल बिकम अ पासवर्ड। टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड टू सच एन एक्सटेंट, पेमेंट्स सब ऑनलाइन हो गए हैं, बैंक का काम करीब करीब खत्म हो गया है। ऐसे से अमेरिका में ऐसे बैंक है जो फिजिकल बहुत काम है, नाम मात्र के हैं, तो पता लगा दे आर जस्ट सर्वर्स ओनली। तो आप टेक्नोलॉजी किस तेजी से मूव कर रही है। ई-कॉमर्स इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स डेवलपिंग इन ए वेरी बिग वे। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो बाइंग पावर इंडिया के पास है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट हैज वेरी गुड स्कोप। कभी ध्यान दिया है कि अमेज़न का एडवर्टाइजमेंट आता है, क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जोड़ रखा है थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स को। हर तरह का सामान आपको सप्लाई मिल जाएगा, कोई भी तरह की किसी भी चीज दीजिए वहां पर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने। एक टाइम था अगर अब तो फ्लिपकार्ट देश में पिछड़ गई है, बिकॉज टू बिकम इन्फोसिस ऑफ इंडिया। और आपको पता है फ्लिपकार्ट किन लोगों ने शुरू की थी? तो बंसल ब्रदर्स हैं, उन लोगों ने ये शुरू किया था। आरटी दिल्ली के प्रोडक्ट है। एक दिन सोचा कि फ्लिपकार्ट शुरू कर दें और उन्होंने फ्लिपकार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। स्नैपडील है, अब बात देखिए कितने कितने डिस्काउंट अवेलेबल है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कैश ऑन डिलीवरी है, रिटर्न है, इतनी सुविधाएं दे रखी हैं। और सबसे बड़ी बात है रीच, दे हैव अ वेरी वाइड रीच, दे कैन डिलीवर एनीवेयर। पूरा सारा कंप्यूटर का खेल गेम है, पेमेंट गेटवे है उनका। कितने स्टोर्स को जोड़ना है, कितने प्रोडक्ट्स को रखना है, कितना डिस्प्ले करना है, उसका कंप्यूटर का कितना बड़ा काम है। कैन यू इमेजिन हाउ बिग देयर कंपनी? अभी अवर हर्ड द नेम ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा का नाम सुना आपने? व्हाट इज अलीबाबा? वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर्स ऑफ चाइना। आज जितने भी आदमी बहुत लोग अलीबाबा सामान खरीदते हैं। अलीबाबा में एक ही कमी है, बल्क में सप्लाई करता है। अगर कोई सस्ता आइटम है तो थाउजेंड में चाहिए। ये नहीं कि आपको लेड का बल्ब चाहिए तो आपने 2-4 पीस खरीद लिए। 1000 इवन पेस मेकर जो हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, दैट इज अवेलेबल ऑन alibaba.com. Not one piece, they won't sell one piece, they will sell the minimum quantity 10 pieces, 20 doesn't, bulk business है। बिजनेस टू बिजनेस आप जानते हैं, ई-कॉमर्स है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस भी बहुत स्कोप है इसके अंदर। इंडिया हैज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप। आई एम वेरी हैप्पी दैट सच अ सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू ब्रीफ यू अबाउट दिस ई-कॉमर्स and the scope of it in future. It's a very good scope and you have a very good job potential in this area. I wish all the success. I wish the seminar all the success. Thank you very much. I'm sorry I forgot to welcome the experts in this field. I again thank them for having spared the valuable time for us. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much.
Now I request our group director, Professor Ranjit Singh ji, to share his views on this day to you people. Professor Ranjit Singh ji. Mr. B.K. Jain, Director General, Professor B.K. Gupta from Granite Technology Private Limited, Sir P. Rajguru, Director, Indian Institute of E-Commerce, Bangalore, Sri H.S. Rao, our Head of Placement, Professor Nitesh Agarwal, Santosh Agarwal, Director, HRIST, Dr. S.K. Singh, HOD Management Department, dear faculty members, dear students. We are very thankful to the two experts, Professor B.K. Gupta and Sri P. Rajguru, for coming to our campus. We welcome them on behalf of our HRIT group of institution, and I hope we will get much value advice as well as a lot of information from them on what is e-commerce and what is the scope of e-commerce in the Indian market. This is the topic of this seminar. Let me tell you briefly that you are from e-commerce students are also there, BBA and BCA also. But commerce is a very old term, that's it, buying of goods and services from the market. And it's a very long story. Since the civilization, organized cities started, since then the commerce is there. So as the time progressed, then we started having postage, getting the goods from postage. There was an advertisement and you order and you get them by postcard. Then of course, there are another way of selling the goods through catalog. There is a huge catalog. In our country we have missed that place. But in all four countries, let's say 20 or 30 years back, they used to use catalog. Given freely to the people, or they go to their place and their catalog is there and order from the catalog. And the goods will come to your house. When the computer, internet or this computer revolution started in 1995, after that website started. You are selling goods and service through website, and that is called e-commerce. So you go on the website and various products are displayed and you can choose one and it will come to your house. You can make payment. There are various companies, they have different mode of payment. Some want money in advance, some of them you have to pay when you get the item at your place. In India, there is a lot of scope. Very recent, for the last 10 years, I think there has been a lot of tremendous expansion in the area of e-commerce. We have Flipkart, Amazon, various other companies are coming. And because they are giving huge discounts, so a lot of customers are attracted to it. And first of all, even our bricks and mortar store, which are having showrooms and all this, they also put up their website, and you go on their website also, if you don't want to go to their showroom, you can buy through the website. So this revolution is coming, slowly coming. It's a very important area, and I think in another 20 or 30 years, maybe more than 50% of all our commerce will be through this means only. Because it is very convenient to the busy people who are very busy, instead of going to the store. Because still the prevalent way that you go to the mall and you do your weekly purchase. Maybe a time may come that this small concept as well as getting goods and services may be turned into this e-commerce more and more. Maybe it is used for more entertainment or restaurant or other kind of services. So time is changing, technology is changing, and there is huge opportunities we have to look for, and we have to make use of that. So as a students of commerce or as a user of commerce, I think it's a very good opportunity to make use of this workshop, and I thank the experts who are here. Thank you very much. We will have the brief interaction with them. So
we have two speakers today, as I already told you. So, first one, Professor Dr. Brajesh Kumar Gupta, B.K. Gupta sir, is here. Dr. Gupta is founding director of Branet Technologies Private Limited. He joined teaching professor in 1991 after his post-graduation. He has 26 plus years of teaching, research, administrative and industry experience at various levels in Indian education system and abroad. He served in Ministry of Defence, Government of India as a civilian officer. To carry out his research work in the area of high-speed communication, he enrolled himself at Indian Institute of Technology, Roorkee, in January 1999. He had worked on two major research projects sponsored by UGC New Delhi and AICTE New Delhi and completed them successfully. He has served in reputed technical institutes of UP Technical University, Lucknow since 2003 after completion of his PhD. He has published 51 research papers in international and national journals and conference proceedings. He has attended 40 plus international, continental and national conferences, business summits, workshops and symposium in India and abroad, and chaired technical sessions in several international conferences. He is author of a book on mobile computing. He has guided several MPhil, MTech students and research scholars for their dissertations and research work. He organized several national conferences, workshops and faculty student development programs sponsored by DST New Delhi and AICTE New Delhi, and delivered inspirational lectures as a resource person during these programs to improve teaching learning process and research standards. He has keen interest to organize industry-institute collaboration programs. For example, software development training program, IBM, IT infrastructure management with IBM, faculty enablement program with Infosys, etc. He is entrepreneurship certified faculty, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Dr. Gupta is an award winner, Shiksha Gaurav Puraskar 2014 on national level for his contribution in the field of technical education, and Albert Nelson Marquez Lifetime Achievement Award 2017-2018 USA. Recently, he is selected for Harvard Kaushal Memorial International Honor Award 2018 by Vivekanand Educational, Cultural and Sports Organization, India. So, with such a personality we have with us, I would like to invite Dr. B.K. Gupta just brief some words with you, although in details, then he will explain you in the seminar workshop. So right now, he just share some words with you people. Dr. B.K. Gupta. Good morning. Good morning, sir. क्या नाश्ता नहीं किया क्या morning? Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good morning. Good morning. Let us bet 80%. Honorable Vice Chairman, sir. Mr. Amit Agarwal, Professor V.K. Jain, Director General, Professor Ranjit Singh, Group Director, Professor Nirdosh Agarwal, Director HR IST, HOD MK Department, HOD Placement Department, faculty members and dear students. First of all, I would like to pay my sincere thanks, especially to the management and administration of the HRIT group, so that they provide us this reputed platform to deliver our services. Here, in the topic we shall discuss later on, but I will go back to the lecture
given by Mr. Anuj Agrawal, Professor V.K. Jain and Professor Ranjit Singh. That is basically the main introduction of the e-commerce. They are already given the inputs, what we have to deliver to you in my session about the e-commerce. They very well explained that what is the importance, what is the background of the e-commerce. We shall discuss later on after this introductory session. But at the moment, my concern is that what the Vice Chairman already discussed with you. I said to you, good morning. That was basically the response. What is your reason for that? Of course, you will know the theoretical of the e-commerce or your MBA degree, your BBA degree, or any program what you are reading here or what you are exploring your studies. But now it is a matter of serious concern. What will be after 3-year or 4-year degree programs? You have to think. We all here, whether management, administration, or the faculty, or like we people, we are not just giving the guideline, but the spark should be get burned in your mind basically. The theoretical part I am not going to touch at the moment, but I would like to ask one question to you. You have good enough money, you have a car or vehicle, 2-wheeler or 4-wheeler. With the help of the money, you also make the insurance of your car or 2-wheeler or your vehicle. Go to the pollution board kiosk, you got a pollution house certificate for your gadi. And by any hook or crook, you also got your driving lessons. You are understanding my thinking? What I want to say? Yes, backbenchers please, not tops. Backbenchers, not tops please. I am basically a teacher, entrepreneur later on. My question is that you have car in your parking, your driving license as well, you have pollution board certificate as well, you have insurance of your car as well. Now, you bring out your car from your house to the road. Please think about that. If you are not well capable of the driving, or you are not having the enough confidence, tell me, you are comfortable driving your vehicle. Please honestly, not a cheating one. It is not a question paper of your board or UP Tech or your what you can say monthly test or your home exam basically. Being as a teacher, I am asking. Think over it. Serious question. You bring your car, you have every facility. Right, sir? You bring your car from your parking, your home to the road. That was my concern with Honorable Vice Chairman, sir. You bring your car, you have everything fit to drive, but having the confidence to drive comfortably. What did you answer? Comfortable? Why? You have everything. This is basically the concern. Why not? You have everything. My dear students, this is the answer of the queries given by the Honorable Vice Chairman, sir. You have to do that job. Nobody will do that job. The college will provide you the certificate as per your capabilities, as per the norms, as per the UP Tech or AIC or UGC. Teacher will help you to get good score. They will guide you. But when you come from the out of the campus to the outer world, then it is your role how to drive your vehicle, how to drive your basically career. You are getting my point? You are getting my point or not? Think about that. After some time, the teacher will say through the mail or through the phone or through the WhatsApp, how are you, got fine. Parents will be asked for 3 or 4 years, but after 5 years or, when the time will be get spent more and more, you will be get worried from within. So, to get escape or to avoid that situation or to overcome that conflict, this is the time basically. This is the time you have to think over it again, what Honorable Chairman says in the morning lecture, in the inauguration lecture, we have to think about that. And this is basically the topic
which have great potential. Great potential means that is the, you can say, shift the entire globe. Don't think that you are here in the HRIT. No, you are wrong. You are in a global platform. Tomorrow maybe in the company, one American can be your colleague or your friend. He is on the same job role. You may be in the foreign country, that is the beating competition. Everywhere you can see. Please don't think that you are only the student of the India. Nowadays scenario is getting changed. You are agree or not? Agree or not? Yes, sir. Yes, it is happening. When you are working with the MNC not only for the Indians only, it is for every country. Maybe one Korean lady will be behind you or in front of you or in the side by you. One American will be in front of you. One Britishers will be in front of you. You will get very complex. So think over that. Go beyond your academic studies. Now it is not the time only the academic studies. And I am just adding one few points. Time is permitting. Maybe after some time, because the time is changing very fast, I am very grateful to Professor Ankit. The change, the law of change. अभी मॉर्निंग था, गुड मॉर्निंग का 12 बज चुके हैं, आफ्टरनून हो गया, चेंज हो गया टाइम. अभी मैंने शिफ्ट किया था गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून. बट हार्डली आई थिंक good student understand my feelings, but it is the way. Why saying morning, why saying afternoon? Maybe after some time the teacher will be not in the classroom. Who will be there? Any idea? You have to prepare the question paper, check your answer sheet. Not only the hard copies, online test. It is happening. It is happening, my dear students. Artificial intelligence will give the better answer of your query in place of your normal human behavior. It is happening. So please think about that. Not only 100%, at least 20%, 30%. So that you can think about that in which scenario we are moving, and that is what we call paradigm shift. That is what called paradigm shift. And only the e-commerce is having the potential that we can make India as a superpower, economic power. It is already coming up day by day. But it is the time to think that we can contribute this serious concern, that what we can contribute to the progress of the society. First of all, the progress of the self, then to our family, then to the society, then to the nation, and overall to management. And Professor Lalot as well was coordinating all this program from the very beginning and invite us on the platform of the HRI. Thanks a lot. Our next expert speaker of today, Mr. P. Rajguru, Director, Indian Institute of E-Commerce, Bangalore. Just brief introduction about him. A result-oriented learning professional with experience of more than 15 years, including international exposure, lead high-performance teams to nurture and grow a business, evaluate opportunities and risks, and also deliver innovative new solutions to challenges. His current profile is he is business head of institutions, Indian Institute of E-Commerce, Bangalore. His professional educations are he is MBA from University of Wales, London, and Chartered Institute of Management Accountants, CIMA, from London, UK. I'll request Mr. P. Rajguru just to share few words to you, and after that we'll start the session in detail. That sounds better now. Been quiet for a long time, I guess. First of all, I would like to thank the management of the HRIT to giving the opportunity to Indian Institute of E-Commerce to have a session with you all. And I'm here to share my experience as well as like what is happening in the e-commerce. So in the coming 1 hour, maybe 1.5 hours, I don't know how long it will take, and we will be discussing more on the e-commerce, right? And this will be an interactive session. I will not be delivering any lectures to you, right? I'm sure that you people are more knowledgeable than me. So whatever I'm having, the experience in the e-commerce industry and what is happening in the global market, so I will be sharing the same with you, right? So let's start the session, and by the end of this session, I want that someone from
this batch, like this team, should start up their own enterprise on the e-commerce platform. And we are there to guide you all, right? So that is my promise, that we are there to guide you, we are there to help you, how you are going to set up your own online store. Let's start this journey, right? Thank you. Your some concrete ideas on the topic, the discussion will start. For that sake, I am thankful to all the dignitaries, especially our chairman, Sir Dr. Anil Agarwal ji, who has given such a beautiful environment to you all people, to us, to grow all together in your career. Our Vice Chairman, Anjum Agarwal ji, our DG Sir, Professor V.K. Jain Sahab, Group Director, Professor Ranjit Singh ji, our guest speakers, Professor B.K. Gupta ji, Rajan Sahab, and our Director HRISD, Professor Nirdosh Agarwal ji, HOD MBA SK Singh Sahab, Gangele Sahab, and all faculty members. So thank you very much for this, and we'll start this next technical or the interactive session now. Okay, thank you, and we'll start the program further. Just a moment. Hello. Yes, please. This is feedback now after this introductory session. So, please, you are not comfortable? Comfortable. Now, yes, my dear WhatsApp, later on. Check the WhatsApp of your life first, later on. Yes, request, humble request. Fine. Because if you see one WhatsApp, it will be go there. Fine. Fine. So, my dear students, as I told you that, first I will just take 5 to 10 minutes, so that first we have to realize the potential of basically the e-commerce. Fine. Okay. Commerce is very, very old concept, just like our civilization. Fine. It is not a new concept. But, hello. Backbenchers, yes, last. I am a teacher, I told you already. You're thinking your vision for that corner, last. Ab aage aa jaiye last. Or how can we provide our services to the Indian market? Here, my dear friend, I would like to share. When I attended a number of conferences and the summit, then India is one of the best countries in the world, so that it is service oriented. Service oriented means here that if you are making a construction, for example, building construction, real estate, you are understanding my language or not? It is very, very resourceful consumption is there. Means you have to take water, electricity, so many things. Fine? So that is your infrastructure today. But if you go to the service sector, then through the service sector, you can get better outcome, better results through the less inputs. You are getting my point? So India is basically the service sector, and we can make good contribution to the service sector of the Indian market, and e-commerce is one of them. So let us get started. Myself, Brijesh Gupta, and I am director of one of the private limited, that is Branded Technologies. We are working for the Industry Institute Instruction, and how we can give the skill development or skill sharpness to the students, so that they can think their own career, they can think about their job. Mr. Rajguru will tell you in detail, and even if they can also build up their own entrepreneurship. Fine. So this is basically the objective of the company. Now I am coming to the topic. Here, just in brief, I would like to say that it is the paradigm shift. You know the meaning of paradigm shift? What is paradigm shift? Any idea? No idea. Paradigm shift. No idea. Money. Money is one of the factor. Paradigm shift means you can
If you go back, what was the superpower? What was the superpower if you go back to the 10-year or 15-year or 20 years? America and Russia. You are getting my point? Fine. But now because of the open policy of the Russia, now the power got shifted to the, which is the second powerful country in the world. China is upcoming. Okay. So now the two superpower. Still Russia is there, but America, USA and the China, they are the now superpower in the world. So power got shifted from Russia to the China. Am I right or wrong? That is paradigm shift. That is paradigm shift. That is paradigm shift. Fine. So it is, e-commerce has a very tremendous business growth in our country basically. So that's why I told you in the beginning that this is the game changer basically. E-commerce is the game changer. If you go back, as Professor told that, Alibaba, you know Jack Ma? You know Jack Ma? Who is Jack Ma? Even if when I was in IIT Roorkee 1999, तो हमें पेन में देखिए डाटा जाना पड़ता था from one location to the another one. It was not too popular. I am talking about 99. But in 1995 in America it was very much powerful to people, and he became one of the richest people in the world. You know Jack Ma is the one of the richest in the Asia continent. You know this thing? He just got retired. Not retired. Got CEO to the other company, to his partner, next partner, and now still he is the richest person in the China. Amazon? What is Amazon? Website. E-commerce website. Nice? Okay. Who is the owner of Amazon? Yes. Who is? जानते हैं उनके बारे में जानते हैं? He is the बीट कर दिया उसने. मालूम है ना? Right or wrong? यही paradigm shift है, my dear students. This is paradigm shift. उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, but they know how to explore the potential of the technology, especially the internet. Right, sir? Please check me if I am wrong, because it is a mutual understanding. Without mutual understanding, we cannot move forward. I am just briefing the idea, background of the e-commerce. Mr. Rajguru will tell you the real things. How can we explore these possibilities? Basically, that is basically my theme. I am not going to the PPTs. It is just for your information I would like to share to the training and placement department for your knowledge purpose or your website of the college from our side. But the purpose of this discussion is that if Jack Ma became the richest person in the world, one of the richest person in the Asia continent or in the world, then Amazon owner can become richest in the world. He beat the Bill Gates. Then if we think just 0.0001%, then would you think about your career? No need. You will be not the job seeker basically. You will be becoming the job creator. That is basically the purpose of this workshop. आपको भागना नहीं पड़ेगा दूसरी जगह. पैसा आपके पास घर बैठ के आ जाएगा, ऐसी टेबल के ऊपर आ जाएगा. That is the potential of the e-commerce, right, sir? This is the beauty of the e-commerce. आप अपने वो भी करेंगे, MBA भी करेंगे, BBA भी करेंगे, 40-50 हजार रुपया रात को सिर्फ 2-3 घंटे काम करेंगे, उससे आपको आराम से आएगा. व्हाइट मनी होगा, ब्लैक मनी नहीं. White money. You can make a growth to your career, give support to your family, make more confidence, more reliable. Even if in the student life you can become entrepreneur, you can develop your team, you have a good opportunity. I'm talking it seriously. If 4 or 5 students, like Mr. Rajguru told, we have to develop a platform. We shall think about that after your feedback, after this session workshop. Then, if you become 4 or 5 students, you can develop your own revenue generating project or system. That will give tremendous confidence to you. That is earning while learning. That is basically the purpose of the e-commerce. So here, let's come back. It is transformed the way business. I am talking with you basically. Don't go to the PPTs, but think about that. And when Mr. Rajguru will make the interactive session with you, to give your ideas, what you can do, what is the challenges, what are the opportunities, maybe some negative or positive, but at least you have to think. I give 2 examples to you before you, Jack Ma as well as owner of the Amazon, and you realize that there is the potential of the
in e-commerce, they became the champion of the world. Here, this is the data given by the report, latest report of the June 2018, that e-commerce is expected to grow US billion dollar 200 billion in 2026 from 38.5 to 2017. That is within 9 years. Within 9 to 10 years, it will be go to the how many times? 38.5 to 200. How many times, my dear? How many times? Simple multiplication. 14 5 या 200. तो 10 year में कितना हो गया आपका? 5 times. तो per year कितना बढ़ा आपका? 50% across. 51%. Agree? So 51% से per year growth कर रहा है इंडिया में मार्केट ये. ठीक है? And it is because of the internet and smartphone. Later on we shall come what is the role of the internet and smartphone. Here I am going to the little bit fast. It is the market size basically, which is the way that how can you explore the possibilities. In the back slide I provide the data. Fine. That is what is the current scenario and what is the future vision of the experts. Maybe beyond of that. Because they depend on the infrastructure and the facilities and so many parameters. But this is the rough idea or estimate of the expert that the Indian potential of the e-commerce market that will be 50% per year, per annum, right? And within the next 9 to 10 years, it will grow to the 5 times, very huge amount. Second, it is the India's demographic dividend. It is again the new term. And rising internet accessibilities, the sector is likely to scale greater heights. It is very important. Demographic dividend. That is, as one of the speakers told in the lecture, that India is the population of this type of population. Then you can think that we can do a tremendous job for the country. Not for the country, everyone. So please think positive in that way because of this dividend. You know, just like a dam. Dam की energy को channelize करेंगे, what will that provide? Energy. अगर channelize नहीं करेंगे तो क्या होगा? पता लगेगा. Problems in the society. So e-commerce provides a very strong and supportive platform to overcome all these social challenges. Fine, so it is one of the best way to think about in that direction. Now it is here I am just telling you the total internet user base to 8 to 9 million 2021 from 445.96. Just you can say just double. Within 4 years it will become just double. Try to understand. And because of the Jio, I am free. Jio free, just like Karlo Dunia Multi में Reliance says. That is the fact. Digital India program. Free में आपका डाटा चल रहा है. मालूम है जब 1998 में there was a smartphone, देखा आपने वो? कितना बड़ा होता था स्मार्टफोन? और 1 मिनट का कॉल मालूम है कितना होता था? 16 to 20 rupees. इनकमिंग का अलग लगता था, आउटगोइंग का अलग लगता था. देखा वो जमाना? नहीं देखा होगा, बच्चे होंगे. ठीक है? But now it is the time to come that we can explore that possibilities. You have the smartphone, you have the laptop or tablet, you can do anything. You can communicate to any part of the world. पहले रेलवे के पास हम जाते थे कि 1 हफ्ता लगता रिजर्वेशन कराने में टिकट को. 1 हफ्ता लगता था. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years back, 1998, 88. एक हफ्ता लगता था रिजर्वेशन हो गया फिर वो लिख के देता था कलर उसके ऊपर पीले रंग की स्लिप देखा हो जमाना नहीं देखा होगा मम्मी पापा से पूछना. 1 हफ्ते के बाद रिजर्वेशन पे लिख देता था टायर 2 सीट नंबर अपर 142. बड़े खुश होते थे कि कंफर्मेशन हो गया. अब तो आप अपने मोबाइल से कर लीजिएगा कंफर्मेशन. नॉट ओनली ऑन द ट्रेन, एयरप्लेन, एनीथिंग यू कैन डू. वोल्वो बस, एसी बस, aeroplane, whatever maybe you want to do, you can make a transaction for that. That is e-commerce basically. Fine. So this is there. Now, so it is here that when more and more infrastructure or smartphone or internet will be reached to the more and more areas, then e-commerce will develop more and more. Fine, it will become more and more strong. Agree? Because e-commerce based on the internet and the technologies. So it is here. So I told you already that it is 9,000 crore. So this is the basically simple data that India is having very good opportunities in the e-commerce. So these are the government initiatives. I am just briefing the topic. This is here. The government is also giving the much vertical support to the society, like these are the programs you are Make in India, Digital India, Startup India, Skill India. Basically, we are working on that.
Planet Technologies and Indian Institute of E-Commerce, they are working that how can we explore these possibilities through the industry institute interaction and taking the help of the government. Fine. So we are working for that. This is the RBI and all these things. You know, if you are having the bank account, then you must know your KYC and know your customer. That is what? Because to get more security feature to your account or your e-commerce pattern. So this is here about your various government, what you can say, plans. One of the portals is there that is called TRIFED, TRIFED. Fine. So that is for the tribal India. And it is, these are the FDI, foreign direct investment, 100% possibilities are there. So that is also part of your e-commerce. Fine. Road ahead. Just I told you that. I am coming to the second point. Fine. I am just briefing because Mr. Rajguru is there. The Indian e-commerce industries has been on upward growth trajectory to surpass the US. Right? Understand? It is surpassed to US, became second largest. Make it please underline. That is the conclusion of my lecture. Second largest e-commerce market in the world by 2034 to generate more and more revenue for the country. And so these are basically the things. And I'm just concluding. This is all about. I think you understand this one. Fine. Okay. What it says? Huh? क्या कह रहा है ये? This is fact. This is fact. 4 days before, अमेरिका किस तरह का कंट्री था? देश है. But डोनाल्ड क्या कह रहा है यहाँ पे? We are still developing nation. Why? उसने सारा अमेरिका का जो ई-कॉमर्स मार्केट था, उसको चेंज करना पड़ा. They are thinking about the policies of the WTO, World Trade Organization. वो टॉपिक थोड़ा हटके हो. तो क्या कर दिया? From the developed nation, the President of America, Mr. Donald Trump, hence, जो हम लोग सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज को, जो हम रियायतें देते हैं इंपोर्ट सूट्स पे, टैक्सेस पे, we have to cut that to make support our economic more strong or stronger. E-commerce. Okay? So that is the potential. Now I invite Mr. Rajguru. This is not only the cartoon, that is the fact. मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास. तो जैसे आप विकास कर रहे हैं, हम दूसरी तरह से विकास कर रहे हैं. तो आपको जो रियायतें देते हैं ना, चाइना पे दूसरे कंट्री को देते हैं, डेवलपिंग नेशन उनको कट करेंगे, क्योंकि उसने अपनी कैटेगरी को चेंज कर दिया. पॉलिटिकल इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, बट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका इज थिंकिंग अबाउट दैट. फाइन. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ई-कॉमर्स, दैट हाउ मच पोटेंशियल इट हैज. नाउ ठीक लगा? समझ में आई बातें? Now this is the application part, that how Indian Institute of E-Commerce can support you and on HRT platform, so that you can develop your own e-commerce job, career, or your project on the Rajguru to please share the platform and please raise a query. Because here, this is the input. This is the input given to you by the introductory lecture, by the management and the officials of the HRIT. Now we are the people that please give your input, make an open discussion, throw the question to the All right, thank you for start up your own online business. Figures, facts, that is all available in the website, right? So you can go through internet. You're smarter, you can find out all those information. What I'm here to share you a few nitty-gritties of the e-commerce. So as I said in the introduction, when you leave out of this door, probably you'll be having an entrepreneurship skill where no investment is required. I said no investment. अगर मैं आपको कोई business, is it English is enough or it can be English? Both? All right? Okay, no problem. So we will have both given you a lot of information, facts, but there, Jack Ma, Amazon, Alibaba, big brands, Flipkart, so lot many things are happening. But did you find it easy to understand, like, why the companies which are outside India, they are coming to India
They are making the money. They are just taking the revenue out of our country. Amazon, US. Alibaba, Flipkart. No! Flipkart is now non-Indian company now. It was taken over by Walmart. 70% stake what is there. So it has been bought already. Really. So why it is happening? Why these companies are getting attracted towards the Indian market? Why? आप लोग बताओ मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ. Why? Huh? Marketplace. There is one word which I heard from him. Marketplace. और कोई किसी का जवाब? Why the people are coming to India? Yes. Large number of sellers. All right, I'll take it. All large number of sellers. Huh? Yes. The first thing is the population, consumption. Indian market is the largest, market for the consumption. क्यों? क्योंकि हमारी 150 करोड़ की आबादी है. 150. So you can think of the market size. That is the only reason the big companies are entering into India. Now, can we think of starting up our own online business? Can we think of? क्योंकि अगर हम दिमाग में सोचते हैं ना कि ई-कॉमर्स के बारे में, तो सिर्फ हमारा दिमाग सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जाके खत्म हो जाता है. Is it? ऐसा है कि नहीं है? हो? अच्छा, आप बताओ. That means कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं. But majority, if you think of majority, people think of whatever you want to buy, there is only two platforms, Flipkart and Amazon. And sir has already said B2B, B2C, those terms were there. So Alibaba is doing B2B and Flipkart and Amazon, they are into B2C. Basically ये e-commerce किस तरीके से काम करता है? They work on two models. What are those two models? Can anyone tell me? One is already been, given by your friend. That is the marketplace model. What is the other one? What is the other one? Just Google it out. That's easy. सबके पास फोन है? Very good. अभी आपको फोन का काम भी दूंगा. आप लोग WhatsApp खेलते हो ना? WhatsApp and Facebook. So I'll share that thing on the WhatsApp and Facebook, how you can use it effectively. So my question is, one is marketplace and what is the other one? It's an inventory model. Okay, so in e-commerce, it is based on two models. One is the marketplace model, the other one is the inventory model. So what is the marketplace model? Where many sellers sell their products in the market, online market. Right. So he is telling that where many sellers are selling their products. Many sellers or manufacturers. मार्केटप्लेस को कोई हिंदी में समझाएगा मुझे? लास्ट में कोई समझाएगा हिंदी में? मार्केटप्लेस मॉडल क्या होता है? Amazon कैसे वर्क करता है? Did you ever try to find out the model? आप ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बाकी लोगों से पूछता हूँ कि कैसे काम कर रहा है. You know that what is marketplace? Basically, sorry. Excellent answer. Excellent answer. So what exactly the Amazon or the Flipkart is doing? They are just connecting the buyers and the sellers. That's it. End of the story. And they are making the money just to connect them. बेचने वाला खरीदने वाला दोनों को जोड़ते हैं और दोनों का जो ट्रांजैक्शन होता है, they take out certain percentage of that transaction to their account. They call it as a referral code. Amazon people call it as a referral code. यही जो एक रियल एस्टेट में ब्रोकर काम करता है,
कि आपका फ्लैट नहीं बिक रहा है, खरीदने वाला है, बेचने वाला है, दोनों को जोड़ दिया, ब्रोकरेज ले लिया. It is purely a brokerage business. The marketplace model is where the buyers and sellers are being connected on a platform. They are not the manufacturers. They never keep the stock. Inventory model में क्या होता है? They keep their own stock. They manufacture. Very easy. You just need to create a website where you can get connected with the manufacturers or the sellers, and you can market the product, create the market for them. That is how the e-commerce works. ऐसे ही होता है e-commerce. मेरी आवाज sitting down here are on WhatsApp and Facebook. कुछ लोग हैं WhatsApp पे नहीं है शायद. आप नहीं हो? हैं? आप कभी तो रहे होंगे या ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी आपने WhatsApp देखा ही नहीं है. So that means everyone is on WhatsApp. अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एक काम देता हूँ अभी right now, opportunity to earn. Does it sound interesting? And I'll say you don't have to invest, and you will become an e-commerce expert. थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि सर ऐसे कैसे करें, पैसा भी लगाऊंगा और काम भी शुरू हो जाएगा. Exactly करना क्या है मुझे? That comes in our mind. करना क्या है मुझे? What I have to do? And how can I earn? WhatsApp में सबके ग्रुप बने होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, फेसबुक में भी आपके सर्कल बहुत जबरदस्त होगा. अभी आप लोगों के पास कितने लोगों के पास मोबाइल है और विद इंटरनेट है? आई एम श्योर सबके पास होगा. एंड हाउ मेनी यू आर हैविंग द एंड्रॉइड फोन? Probably everyone. ठीक है? I'll give you one app right now. Just download that app. You can start your own business. I'm not promoting that app. Frankly speaking, मैं आपको promote नहीं कर रहा हूँ. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, this is for your knowledge I'm sharing, like how an e-commerce will help you to start up your own business. This is just one drop of the entire ocean. If you want to work like Amazon, what the Flipkart is doing, you can start up right now. Right now, through using your social media marketing. That is your WhatsApp and Facebook. So those who are having the phone and the internet, just open it to the Play Store. Play Store खोलिए please. हो गया? Already काफी लोग तैयार हैं बिल्कुल. सर बिजनेस के लिए तैयार है. So when you open up the Play Store, just find the Glowroad, Glowroad. I spell it again, Glowroad. Glowroad. एक G का निशान बन के आ रहा होगा आपने. Just download it. उसमें जो ग्रीन है या ब्लू है, जी बन के आ रहा होगा. आ रहा होगा? Just download it. हो गया? आपका काम शुरू हो गया आपसे. आपने डाउनलोड कर लिया. सर इंटरनेट चलेगा यहाँ पर? नहीं चलेगा. इंटरनेट ओके. आप अपना लॉगिन बनाएंगे ना, फेसबुक के थ्रू करना चाहते हैं या आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन बनाना चाहते हैं, या गिविंग यू ऑप्शन. Now once you sign up, you will find the categories, products or investment. आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए. किसी का बड़ा फोन है, इसका स्क्रीन साइज बड़ा होने से हाँ, जैसे उस
प्रोडक्ट पे टैप करेंगे, आपके पास एक स्क्रीन आएगा, शेयर कलेक्शन टू ऑन, क्या आ रहा है ऑरेंज कलर में। You just tap that orange button, अभी अलाउ मांग रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शन आ रहे होंगे, शेयर कलेक्शन और दूसरा आ रहा है आपके पास शेयर ओनली इमेजेस। जो पहला ऑप्शन है उसको आप चूज कर लीजिए, कर लिया। अब इसमें शेयर कलेक्शन जो अटैचमेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, पहला बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसी को आपको चूज करना है, कर लिया। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, फेसबुक और एक व्हाट्सएप का आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उससे जस्ट पहले देखिए 10% लिख के आ रहा होगा, 10%। Now these products are available with the Glow Road। कोई मैन्युफैक्चरर है जो इनके थ्रू बेच रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एड अप योर ओन मार्जिन। जैसे आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो 400 रुपये का बिक रहा है, मैं इसको 450 में अपने ग्रुप में बेच सकता हूँ, तो आप इसमें अपना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यू कैन, व्हेन यू टैप दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट, यू विल फाइंड द मार्जिन परसेंटेज आ रहा है इसमें। आप इसमें से कोई भी परसेंटेज चूज कीजिए, जैसे आप चूज करेंगे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाएगी। अभी मान लीजिए मैंने 25% लिया, 25% लेने के बाद नीचे इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, फेसबुक एंड व्हाट्सएप का। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आप उसको क्लिक कीजिए, वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लेके जाएगा और कहेगा अपने ग्रुप में आप प्रमोट कर दो उसको। अगर आपके ग्रुप में, फेसबुक में, कहीं पर भी कोई इस लिंक को क्लिक करता है और इसमें ये स्टोर ग्लो रोड के नाम से नहीं आएगा, दिस विल बी ऑन योर नेम, दिस एंटायर स्टोर विल बी ऑन योर नेम, आपके नाम से ही स्टोर होगा। आई विल शो यू द वीडियो राइट नाउ हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली, राइट। मेरा नाम ग्लोरिया है। मैं ग्लो रोड की लाखों खुश और सफल रीसेलर्स में से एक हूँ। बस आपको चाहिए आपका मोबाइल फोन और उस पर ग्लो रोड ऐप। आप ग्लो रोड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। ग्लो रोड पर हजारों प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स होलसेल यानी कि थोक भाव पर मिलते हैं। आप इन्हें अपने सर्कल में शेयर करके पैसे कमाना शुरू कर सकती हैं। आइए शुरू करें। ये है कलेक्शंस। ये कलेक्शंस एक बहुत ही अनुभवी फैशन टीम हम रीसेलर्स के लिए बनाती है। हर कलेक्शन में लगभग 8 से 10 डिजाइन होती हैं। सभी डिजाइन देखने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक करें। सारे प्रोडक्ट्स। अब अगर आपको लगता है कि ये कलेक्शन आपके सर्कल के लोगों को पसंद आएगा, शेयर कलेक्शन टू अर्न बटन पर क्लिक करें और हम कलेक्शन का लिंक शेयर करेंगे। लिंक शेयर करने पर आपके कस्टमर्स को कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट्स माई शॉप प्राइस नाम की वेबसाइट पर आपकी पर्सनल शॉप में दिखेंगे। ये काफी प्रोफेशनल लगता है और आपको एक भरोसेमंद बिजनेस ओनर की तरह दर्शाता है। सिर्फ इमेज शेयर करना, फिर कस्टमर से फॉलो अप करते रहना, फिर अपने अकाउंट में उनसे पैसे मंगाना, इन सब से ये कहीं बेहतर है। माई शॉप प्राइम पर कस्टमर्स अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र नहीं, आपके कस्टमर्स को ग्लो रोड का नाम कहीं नहीं दिखेगा। तो चलिए शेयर कलेक्शन लिंक बटन क्लिक करें। शेयर करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना मार्जिन ऐड करें। 10%, 20%, 30%, 60% या उससे भी ज्यादा, आप जितना चाहे मार्जिन ऐड करें। वाओ, सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज होकर दिखने लगा। अब बस शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करने के लिए लेफ्ट साइड का फेसबुक
आपके कस्टमर्स ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स को ग्लोबल की तरफ से कभी कोई संपर्क नहीं करेगा, ना ही उन्हें कभी ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस या सप्लायर का पता मालूम होगा। प्रोडक्ट कस्टमर तक बिल्कुल फ्री ग्लोबल कुरियर पार्टनर्स पहुंचा देंगे। प्रोडक्ट शिप होते ही आपको और आपके कस्टमर दोनों को शिपमेंट का ट्रैकिंग डिटेल्स भी मिल जाता है। इन सब का फायदा यह है कि हम रीसेलर सिर्फ सेल पर ध्यान लगा सकते हैं और बाकी झंझटों से फ्री रहते हैं। डिलीवरी के साथ जाने वाले इनवॉइस पर सिर्फ आपका नाम और आपके द्वारा चार्ज किया हुआ प्राइस दिखेगा। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो उसे वापस कर सकते हैं। के कुरियर पार्टनर्स कस्टमर के घर से प्रोडक्ट वापस ले आएंगे और पैसा तुरंत रिफंड हो जाएगा। अब सबसे बड़े की बात, आपको आपके पैसे कैसे मिलेंगे? बिल्कुल आसान है। माई शॉप पर क्लिक करें और ऐड बैंक डिटेल्स में अपना अकाउंट डिटेल्स भर दें। आपका पैसा इसी अकाउंट में जमा हो जाएगा और सारे ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स माई अर्निंग्स नाम के टैब में आपको एनी टाइम मिल जाएगी। तो किस सोच में है? ग्लोबल पर आखिर हम कितना कमा लेंगे? मैं आपको बता दूं, मार्जिन्स, इंसेंटिव्स, रेफरल्स सब जुड़कर ये एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। आपकी पूरी अर्निंग आपकी होती है। How can you use the e-commerce to start up your own online business without any investment? Just using your contacts, you have to market. और marketplace model में यही हो रहा है। Amazon, Flipkart, whatever you name it, all the marketplace model are working on the same principle. Urban Clan देखते हो आजकल आप टीवी में बहुत ऐड आता है, and they are just using that as a suppliers and connecting to the customer, the end user, and that is how they are making the money. So you can think of ideas how you can use this marketplace model whenever you want to start up your own online business. I'll show you one example of Amazon. Last year MBA complete किया है फाइनेंस एंड HR. So मैंने आनंद में जॉब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना शुरू किया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. लेकिन मुझे जब तक जॉब नहीं मिला था तो मुझे ई-कॉमर्स का जॉब ऑर्डर मिला ऑनलाइन सेलिंग के लिए. उसमें मुझे आइडिया आया कि मुझे आई शुड ऑल्सो सेल ऑनलाइन. मैंने प्रीफर किया कि मैं प्रोडक्ट लेती हूँ एज अ मोबाइल रिलेटेड टू मोबाइल, बिकॉज मोबाइल में ज़्यादा क्रेज रहता है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई बर्डन नहीं होगा. पेरेंट्स के बिना पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते तो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज नहीं चाहिए. सो व्हाई शुड नॉट स्टार्ट. तो मैंने Amazon.in का साइट खोला, वहाँ पे ऊपर ही लिखा था कि स्टार्ट Amazon. तो आपको एक फॉर्म खुला तो उसमें सिर्फ एक पेज का फॉर्म था जो मैंने 2 मिनट में ही भर दिया. इट वॉज वेरी इजी. Amazon.in ने कॉन्स्टेंट गाइड करते रहे कि कैसे आपको लिस्ट करना है और आपको कैसे अपना प्रोडक्ट का नाम रखना है ताकि आप बायर के सर्च इंजन में जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट सामने आ सके. तो मैंने देखा कि हाँ रोड सेलिंग गुड है, सो इट्स गुड. तो मैंने सोचा कि मंथली इनकम निकालते हैं कितना होता है. मेरी सैलरी में ऐड होकर बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट होता है which can help my family a lot. Now I'm at the developing stage of the FBA program, so I can go for a better business. I'm so happy we're working with with Amazon.in, and in future I would like to add more things in the Amazon.in as a seller and give more benefit to my parents as well as my sister also. India. Yeah, it's a real video. It's not a fake video. She was an MBA. She started her own business. कैसे शुरू किया उसकी स्टोरी उसने आपको बता दी. I'll show you one more video which is related with again. क्योंकि मेरे
Glowroad. Glowroad is a startup which was started by the IIT graduates and IIMS graduates. They have started this venture in Bangalore, and soonly and like they have been spreading like anything all over India. First question. To become an entrepreneur, what do you require? You require an investment, I guess. Investment is important. When I am giving you an opportunity, like the professors and the teachers who already discussed with you, like we have the brick and mortar model earlier. Now we have seen, that sir has said that paradigm shift is there. All the brick and mortar model, they are converting their business into an online business. Is it or not? अगर आप बिग बाजार भी जाते हैं, आप शॉपर स्टॉप भी जाते हैं, किसी भी आप स्टोर पे जाते हैं, you will find their website and they are doing their sales through online as well. Right? Is anyone here who understand what is a drop shipping? Is anyone who is here who can understand what is drop shipping? Can anyone explain what is drop shipping? Yes. जो home delivery करते हैं. Okay. Now if I say you have the opportunity to become a drop shipper for Amazon India or maybe for Alibaba, you can. Now what is drop shipping? That is important to understand. So when you are starting up your entrepreneurship skill, like if you are thinking of becoming an entrepreneur, the investment goes to the stock. You have to understand what product, where to source your product and how much is the investment. हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में रहता है? स्टॉक पे. अगर मैं आपसे कहूँ कि zero inventory without investing in the stock, you can start up your business. Just invest your time on developing the website and the marketing. And how are you going to do the marketing? Online marketing. That is your digital marketing. And digital marketing means you to use your social media. Social media as well as Google advertising. So that is the easiest and the cheapest way to promote your product. That is how these big companies have made a footmark in the entire country. People know Amazon or Flipkart or any other company because digitally they have been promoting their business. So now dropshipping, as I was asking dropshipping, what is dropshipping? This is one concept which we talk in terms of the e-commerce. Whenever we are setting up an e-commerce portal, we have the option to become a dropshipper. This concept has been introduced in India in the last 1 year, you can say 1 year or so. And this concept is already being done by the Alibaba. Alibaba is already doing this dropshipping business. So now what they do, they give you an opportunity to start up your own online store. You take the product from them, they will deliver the product. They will keep the inventory, you don't have to invest in their inventory. I'll give you one website, if you go through it, you will find how the dropshipping works. That is the website called Oberlo, O-B-E-R-L-O. और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और क्या चाहिए आपको? आपका इन्वेस्टमेंट आपको सॉर्ट आउट हो जाए और अगर आपको पता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, you have to find out the product, you have to understand that thing, which product which you are actually looking forward. Apart from that, what else? E-commerce, we always talk about the automation. E-commerce में होता क्या है? सब automation ही तो है. आपका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर हुआ, ऑटोमेटिकली वो they dispatch the product, you get the message on your mobile that your product is going to get delivered on such and such date. So this is automation. So you have to index on your website the automation. So when we talk about the e-commerce, it has to be a self-sustaining model. Self-sustaining model समझ रहे हैं? एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ. आपने किसी का स्टोर किंग का नाम सुना हुआ है? This is the most watched brand for the last 1 year. And the foreign investors are investing their money in Store King. Store King ने क्या किया? हमारा चैलेंज किस में आता है? We always talk about the metro cities. हम कहते हैं e-commerce जो है वो रूरल सिटीज में नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि people are not literate enough.
and we don't think the infrastructure is lying in the rural area. But this person, Mr. Sridhar, he did that. He connected the rural market and he started the e-commerce venture in the rural market. And this is what he has done in the southern part of India. He is yet to enter in the northern India. I'll show you a brief video about that. हमारे इसी गतिशील उन्नति पर आज पूरे विश्व की नजर केंद्रित है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अब ये कहना जायज नहीं होगा कि ये आर्थिक विकास की लहर, बेहतर जीवन स्तर, ये बदलाव केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित है। ग्रामीण क्षेत्र अब सफलता के बीज बो रहा है, अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, जैसे स्वच्छता, विद्युतीकरण और पंचायत की डिजिटीकरण। असल में ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरी दुनिया में अपना लक्ष्य पा रही है, तो इसमें ग्रामीण व्यापार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। स्थानीय व्यापार जैसे कि फुटकर व्यापारी या फिर लोकल रिटेलर का सशक्तिकरण ही ग्रामीण व्यापार को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है, बल्कि इससे हमारे ग्रामीण उपभोक्ता के जीवन स्तर में बड़ा उत्थान भी आएगा। हमारे फुटकर व्यापारी के बेइंतहा मेहनत करने के बावजूद उनका पूर्ण रूप से सशक्तिकरण में कई चुनौतियां हैं, जैसे नकद संचालित बाजार, मूल्य संवेदनशील मंडी, टेक्नोलॉजी और पूंजी तक सीमित पहुंच, और लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में परेशानी। मैं पौने से किराने दुकान का सामान लाने जाता हूँ, यानी कि वो 25-30 किलोमीटर का अंतर है। सामान टाइम पे बराबर मिलता नहीं, आधा सामान मिलता है, आधा सामान मिलता नहीं, इसलिए परेशानी भी होती है। और मार्जिन के कम में ज़्यादा रेट मिलता है। हमारे गाँव में टीवी पे देख के नए नए प्रोडक्ट ग्राहक मिलते हैं, वो हमको मिलते नहीं। इन चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण व्यापार के शहरी की क्षमता को परखा है हमने, इन परेशानियों का समाधान निकाला है हमने, फुटकर व्यापारी के तकलीफों को करीब से जाना है हमने। सन 2012 से हम प्रतिबद्ध हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान निकालें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान करें। स्टोरिंग से हम घर से माल कर रहे हैं, तब से अपना प्रॉफिट हो गया और सब कुछ अच्छा और धंधा रहता जाएगा। फैसिलिटी से इधर की फैमिली में फैसिलिटी है और अपन स्टोरिंग वाले से धन्यवाद। हम हैं स्टोरिंग। पिछले 5 वर्ष के क्रमागत उन्नति के बाद आज हम 10 राज्य में 40,000 से भी अधिक ग्रामीण व्यापारियों की जिंदगी को छूने में सफल हुए और हमारा यही संकल्प है भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के कोने-कोने में पहुंचना। हमारा सपना है हम सशक्त करें ग्रामीण भारत को, जो कि हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार है। हम हैं स्टोरिंग, बदलते ग्रामीण भारत की आवाज। आपका अपना विजन होना चाहिए, जैसे सर आपसे बोला थे वाइस चेयरमैन सर कि आपका विजन क्या है, so you can connect with that. Now how IIC is going to help you? IIC, Indian Institute of E-Commerce, is the only body in India right now which are pioneered in the e-commerce education and training. Right? So we are into e-commerce education and training where we nurture the student, we help them to grow, how they can set up their own online business, they can come up with their own entrepreneurship skill. So we help them. So it is not only like giving you education or training, we take you along like how the store is being set up. So course हमारे जो मॉड्यूल हैं उसमें सारी चीज़ें इलाबरेटली दे रखी हैं। उसके अलावा पोस्ट ट्रेनिंग व्हाट वी डू, वी कंडक्ट देयर ओन बिजनेस। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है,
वेबसाइट में किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है ई-कॉमर्स पोर्टल में, एंड हाउ यू गोइंग टू सेट अप दैट, which market you have to identify, where the product should come from, where the product should go, how you are going to market the product, digital marketing, everything is there. आप MBA करने के बाद भी जॉब करेंगे, काफ़ी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? और कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है अपने ऑलरेडी फैमिली रनिंग बिजनेस का, एंड दे वांट टू गो गेट इनटू द ऑनलाइन बिजनेस एज वेल, सो दे कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू द ऑनलाइन बिजनेस। या लेसन क्या करेंगे, राइट? आई थिंक सब लोगों को कुछ है ना, वो बहुत ज़्यादा है। I just wind up this session, and in future if you have any queries or any kind of apprehensions in your mind, you can contact us. Sir is here, Dr. D.K. Gupta ji, as well as Rawat sir is here. So you can come up with your queries. If you need any kind of assistance in setting up your own online business, you are most welcome. We are there to help you. Are you interested or not? Government also supports us. Also managing development and design user knowledge. It's a golden opportunity that we can work together. And you know, junior Actually, we are thinking of creating an incubation cell. So what are incubation cells? सबको पता है incubation cell कैसे काम करता है? अगर आप में से कुछ entrepreneur बनना चाहते हैं जो अपना ऑनलाइन सेटअप करना चाहते हैं, your own business. By the way, जो Glowroad का जो ऐप दिया आप लोगों को, आप उसको यूज कर सकते हैं. It is work from home concept, which is working perfectly. If you want, you can spend some time on that instead of sending the message to your friend. Do something productive. मेरा नाम ग्लोरिया है। मैं ग्लोरोड की लाखों खुश और सफल रीसेलर्स में से एक हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी ग्लोरोड पर पैसे कमाना कैसे शुरू करें। बिल्कुल आसान है, बस देखते जाइए। बस आपको चाहिए आपका मोबाइल फोन और उस पर ग्लोरोड ऐप। आप ग्लोरोड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। ग्लोरोड पर हजारों प्रोडक्ट्स और कैटलॉग्स होलसेल यानी कि थोक भाव पर मिलते हैं। आप इन्हें अपने सर्कल में शेयर करके पैसे कमाना शुरू कर सकती हैं। आइए शुरू करें। ये है कलेक्शंस। ये कलेक्शंस एक बहुत ही अनुभवी फैशन टीम हम रीसेलर्स के लिए बनाती है। हर कलेक्शन में लगभग 8 से 10 डिजाइन होती हैं। सभी डिजाइन देखने के लिए व्यू प्रोडक्ट्स क्लिक करें। तो ये है इस कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट्स। अब अगर आपको लगता है कि ये कलेक्शन आपके सर्कल के लोगों को पसंद आएगा, शेयर कलेक्शन टू अर्न बटन पर क्लिक करें। अब हम कलेक्शन का लिंक शेयर करेंगे। लिंक शेयर करने पर आपके कस्टमर्स को कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट्स माई शॉप प्राइम नाम की वेबसाइट पर आपकी पर्सनल शॉप में दिखेंगे। ये काफी प्रोफेशनल लगता है और आपको एक भरोसेमंद बिजनेस ओनर की तरह दर्शाता है। सिर्फ इन
फिर शेयर करना, फिर कस्टमर से फॉलो अप करते रहना, फिर अपने अकाउंट में उनसे पैसे मंगाना, इन सब से ये कहीं बेहतर है। माई शॉप प्राइम पर कस्टमर्स अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके कस्टमर्स को ग्लो रूट का नाम कहीं नहीं दिखेगा। तो चलिए शेयर कलेक्शन लिंक बटन क्लिक करें। शेयर करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना मार्जिन ऐड करें 10%, 20%, 30%, 60% या उससे भी ज्यादा, आप जितना चाहे मार्जिन ऐड करें। वाह, सारी प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज होकर दिखने लगा। अब बस शेयर करें। फेसबुक पर शेयर करने के लिए लेफ्ट साइड का फेसबुक आइकन क्लिक करें। व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए शेयर ऑन व्हाट्सएप क्लिक करें। शेयर करने पर आपके कस्टमर्स सारे प्रोडक्ट्स देख पाएंगे और जो उन्हें पसंद हो ऑर्डर कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स को ग्लो रूट की तरफ से कभी कोई संपर्क नहीं करेगा, न ही उन्हें कभी ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस या सप्लायर का पता मालूम होगा। प्रोडक्ट कस्टमर तक बिल्कुल फ्री ग्लो रूट कुरियर पार्टनर्स पहुंचा देंगे। प्रोडक्ट शिप होते ही आपको और आपके कस्टमर दोनों को शिपमेंट का ट्रैकिंग डिटेल्स भी मिल जाता है। इन सब का फायदा यह है कि हम रीसेलर्स सिर्फ सेल पर ध्यान लगा सकते हैं और बाकी झंझटों से फ्री रहते हैं। डिलीवरी के साथ जाने वाले इनवॉइस पर सिर्फ आपका नाम और आपके द्वारा चार्ज किया हुआ प्राइस दिखेगा। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो उसे वापस कर सकते हैं। ग्लो रूट के कुरियर पार्टनर्स कस्टमर के घर से प्रोडक्ट वापस ले आएंगे और पैसा तुरंत रिफंड हो जाएगा। अब सबसे पते की बात, आपको आपके पैसे कैसे मिलेंगे? बिल्कुल आसान है। माई शॉप पर क्लिक करें और ऐड बैंक डिटेल्स में अपना अकाउंट डिटेल्स भर दें। आपका पैसा इसी अकाउंट में जमा हो जाएगा और सारे ऑर्डर्स की पूरी डिटेल्स माई अर्निंग्स नाम के टैब में आपको एनी टाइम मिल जाएगी। तो किस सोच में है? ग्लो रूट पर आखिर हम कितना कमा लेंगे? मैं आपको बता दूं, मार्जिन्स, इंसेंटिव्स, रेफरल्स सब जुड़कर ये एक अच्छी खासी इनकम हो जाती है। आपकी पूरी अर्निंग आपकी